Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you're all doing great. So today we will discuss about the preposition. What is preposition? Okay, so I want to purchase a new clothes my entire family the coming Sunday. The above are a group of words but don't form a proper sentence. Okay, I want to purchase new clothes for my entire family on the coming Sunday. So the above sentence is a proper sentence since the underlined words are added. To say the underlined words have created proper links between words such as and verbs, nouns, etc. So these words are called prepositions. Okay, so preposition basically वो word होते हैं जिससे हम किसी भी noun को links में create कर सकें. ठीक है, किसी भी नाउन को, किसी भी प्रोनाउन को, किसी भी एडजेक्टिव को या किसी भी वर्ब्स को, फ्रेजेस को विद द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस टू फॉर्म अ प्रॉपर सेंटेंस. ओके, हमने किसी भी सेंटेंस को प्रॉपर फॉर्म में राइट करना हो सो देन हम preposition को यूज़ करते हैं. सो हेयर वी गो. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ prepositions. Basically, preposition is a word which links nouns, pronouns, adjective, verbs and phrases to the other words in a sentence to form a proper sentence. So preposition से हम अपने sentence के meaning को complete कर सकते हैं. So अपर सेंटेंस को अगर देखें, आई वॉन्ट परचेज न्यू क्लॉथ्स माई एंटायर फैमिली द कमिंग संडे. सो इसमें देखें ये नहीं बताया गया या रेफ़र नहीं किया गया किसके लिए हम परचेज करें. फॉर माई एंटायर फैमिली ऑन द कमिंग संडे. सो प्रपोजिशन को यूज़ करते हुए हमने सेंटेंस को एक प्रॉपर फॉर्म दे दिया है. ओके, सो फॉर एग्जांपल माई शर्ट इज़ इन द शेल्फ. Okay, the cat is on a wall. Okay, the workers take rest beneath the tree. We use woolen cloths during winter. Please spread the cloth over the table. I'm fond of sweets. Bring a chain from the room. So underline जो words हैं यहाँ पर basically as a preposition use किए गए हैं just for proper form of a sentence. Okay, in, on, beneath, during, over, off, from, ये सारे क्या हैं prepositions. So prepositions fall under the three classes. Three classes होती हैं preposition की, like simple, compound and group of words in a phrase. For example, हम first को discuss करते हैं पहले, like in, and, at, by, to, up, of, for, from, till, with, through. These are all simple preposition. ठीक है. सो कंपाउंड आपको पता है बेसिकली कॉम्बिनेशंस होते हैं जस्ट टू. ठीक है, किसी भी हमने टू सेंटेंसेस को एक सेंटेंस के तौर पर राइट करना हो देन हम कंपाउंड वाली जो है स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं. बट यहाँ पर ठीक है जो कंपाउंड प्रपोजिशन है वो अबव, बिलो, बीनीथ, बिटवीन, बिसाइड, बिहाइंड, इनसाइड, आउटसाइड, विद इन, विदाउट. ठीक है, amidst, about and along. These are all compound prepositions. So group of words in a phrase. Since phrases which functions as a prepositions are called prepositions by means of, in favor of, in order to, instead of, in spite of, in place, with reference to, on account of, with regard to. So these are all group of words in a phrase. Okay, so I hope prepositions का भी concept clear हो गया होगा. See you next video. Take care. Allah Hafiz.